Hey guys, welcome back to this brand new episode of Simple Yet Gorgeous. And in today's video, we are going to do a fun-filled challenge. That is कि हम लोग 24 hours के लिए healthiest food like meal और dish ideas search करेंगे and उसी को बना के try करेंगे. So yeah, if you are interested, without further ado, let's quickly dive into the video. Okay, so the first thing that we are going to make is the breakfast for the day. So breakfast के लिए जो सबसे popular अभी बहुत trendy होके रखा है, that is the healthiest kind of a breakfast bowl, and that is exactly what we are going to prep today. नाउ सबसे पहले एक बोल में हमें थोड़ा सा मिल्क लेना है. नाउ आई एम यूजिंग सोया मिल्क बिकॉज आई एम लैक्टोज इंटॉलरेंट. देन उसके ऊपर थोड़ा सा ग्रेनोला लेंगे. उसमें ऑलरेडी कुछ ड्राई फ्रूट्स है, दैट्स वाई आई एम नॉट एडिंग ड्राई फ्रूट्स मतलब एक्स्ट्रा करके. देन उसमें थोड़ा सा फ्रूट्स भी ऐड कर लेंगे. यू कैन ऐड एनी फ्रूट ऑफ योर चॉइस एंड दैट्स इट. थोड़ा सा हनी ड्रिजल कर लो एंड योर ब्रेकफास्ट बोल इज़ ऑल रेडी. दिस इज़ ना लाइक ए बोल ऑफ फ्लेवर्स. लाइक इतना कुछ ऐड हुआ है, इतना सारा फ्लेवर्स का मिक्सचर है. लाइक थोड़ा क्रंची, थोड़ा स्वीट. So now it's the time to rate the breakfast bowl. Like actually it was good. It was not bad. But for people like me जिनको उतना ज़्यादा sweet tooth नहीं है, and the first thing in the morning you are getting something sweet, मतलब not savory kind of a thing, तो उतना टेस्ट बर्ड के साथ ना वो accustomed नहीं है. So that's the reason I'm going to rate it 6 out of 10. 4 hours later. So here I am during the lunch time, and आज lunch के लिए we are going to make this very trendy and viral, सारे shorts में भी आ रहा है ना, that healthy tomato soup. Exactly उसी को आज हम लोग बनाने वाले हैं. And उसके साथ I am going to make some bread sticks. But ये मेरा like खुद का दिमाग चला है that I am going to take some multi-grain bread and उसको ना slice करके उसका sticks बनाएंगे so that it's a healthier option. So let's go and quickly start. द फर्स्ट थिंग हम लोग को 2 या फिर 3 टोमेटो लेना है एंड उसको ना थोड़ा सा सॉल्ट के साथ बॉईल कर लेना है विदाउट रिमूविंग द पील. देन उसको ग्राइंड कर लेंगे एंड ऑन द अदर साइड एक तवा में हम लोग थोड़ा सा बटर लेंगे. देन उसमें लाइक ये तेज पत्ता, थोड़ा सा क्लोव्स एंड थोड़ा सा दालचीनी भी यू कैन ऐड. एंड देन अच्छे से उसमें जो हम लोग का प्यूरी बना था टोमेटो का उसको पोर कर देंगे एंड ऑल्सो थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे. देन उसको 2 या 3 मिनट्स तक बॉयल होने के लिए रख देंगे. एंड ऑन द अदर साइड हम लोग थोड़ा सा बटर लेंगे एक पैन में और उसमें अपना जो ब्रेड हम लोग स्टिक्स बनाए हैं उसको लाइक टोस्ट कर लेंगे सो दैट वी हैव आवर ब्रेड स्टिक्स क्रंची एंड नॉट सॉगी. एंड वंस इट्स अ बिट ब्राउनिश, जो समझ में आ जाएगा थोड़ा टोस्ट हो चुका है ऑलरेडी, उसको हम लोग प्लेट में सर्व कर लेंगे. This is how our soup has turned out. एकदम like thick enough but not very thick because हम लोग उसमें कॉर्नफ्लावर वगैरह ऐड नहीं किए so that it's healthier. So now let's try it out. As you can see by my face expressions, like मेरे को बहुत अच्छा लगा ये. It was really tasty. Like एकदम tangy सा एक flavor आ रहा था and it really turned out to be very delicious. Okay, so I feel this was a really tasty and the best combo ever, like breadsticks with soup. And ये perfect है सबके लिए, like vegetarian and non-vegetarian, everyone can try it out. And personally I liked it very much. वो जो tomato soup का tangy एक taste था, it was just outstanding. So I am going to rate this meal 9 out of 10. 1 eternity later. Okay, तो अभी शाम हो गया है. It's around 5:30 and it's the time for some snacks.
And for our snacks, we are going to make the most spoken about meal when it comes to healthy eating or diet related things. And yeah, you guessed it right, it's a smoothie. So today I am going to make a banana and chocolate smoothie. So let's quickly make it. To make this, all we need is some ice cubes and some soya milk like I am using. You can use any milk of your choice. Then some frozen banana, peanut butter, little bit of cocoa powder and very small amount of vanilla essence. बस इसको अच्छे से blend कर लो and your banana chocolate smoothie is ready. एंड मैं एक्चुअली ये फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी बट मुझे लगा नहीं था ये इतना टेस्टी होने वाला है. दिस टेस्टेड एग्जैक्टली लाइक सम फैंसी डेजर्ट. Okay, so this was really awesome. Like, simply I can say it was a 10 out of 10 because it was such a chocolatey flavor with that, you know, vanilla essence na ekdam dessert kind of a feel aa raha tha. So it was really yummy. So you can definitely give this a try and it's surely 10 upon 10. 3 hours later. Okay, so it's the last meal of the day. It's the dinner time and salad ke bina to like ek healthy option wala video is totally incomplete. So today we are going to make a salad bowl and like salads are very trendy, you know, matlab bahut zyada it's in and everyone is talking about salad and ghas phus, but it can be tasty. It can really be tasty. And that's why today we are going to make this Italian dressing for the salad that we are preparing tonight. So let's give it a try. The best part is for making this you need एकदम basic कुछ चीज़ें like olive oil, vinegar, grated cheese, some garlic powder or garlic paste, oregano and some salt. बाकी vegetables के लिए तो you can have any vegetable that you have at your home like onion, then bell peppers and tomatoes, whatever you have at your home, olives. And dressing के लिए the items I mentioned, बस उसको mix करना है. Ideally तो एक jar में mix करना चाहिए, but since I don't have one, I am doing this in this small container. And बस हमारा dressing ready हो जाएगा. Then salad bowl में सारा वेजीज को ऐड करना है. देन उसमें अपना जो सैलड ड्रेसिंग है उसको ऐड कर देना है. देन टॉस इट ऑल टुगेदर एंड योर सैलड बोल इज ऑल रेडी. वेजिटेबल्स तो आप कोई भी यूज कर सकते हो. जस्ट मेक श्योर टू चॉप देम वेरी फाइनली. उससे ना क्या होता है वो टेस्ट थोड़ा एनहांस हो जाता है. देन जस्ट गिव इट अ नाइस मिक्स एंड यू आर ऑल रेडी टू टेस्ट इट. एंड या लास्ट में बस थोड़ा ऊपर से चीज को स्प्रिंकल कर लेना है. एंड हियर आई गो रेडी टू टेस्ट माई इटालियन सैलड बोल. सो टेस्ट करके देखते हैं कैसा बना है. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द टेस्ट, ये थोड़ा शायद एक्वर्ड टेस्ट है बट इफ़ यू एंजॉय समथिंग सोर एंड स्पाइसी देन तो ये बहुत ही अप्रोप्रिएट है फॉर यू. लाइक people like me, like I personally liked it. इसमें बहुत सारा फ्लेवर्स का मिक्सचर था. थोड़ा स्पाइसी भी था, थोड़ा सा सोर भी था because of the vinegar. And as I said that salads can really be tasty while being healthy. I was absolutely right. This salad really tasted amazing. You please give it a try at your homes. This will again be a 9.5 out of 10. It was one of the best meals of the day and I really enjoyed it thoroughly. So yeah, with that we come to an end of today's video. If you ask me to rate all the meals, I will rate the Italian salad as number 1. Then comes the smoothie, then the tomato soup and then the breakfast bowl because it's not my kind of a thing. But yeah, if you like this video and if you want to see more such videos, comment down below your recommendations so that I can try them out. And please don't forget to like, share, subscribe.
simple yet gorgeous, and also press the bell icon so that whenever I upload a new video, you get notified. So bye bye for now. Take care of yourselves and see you soon.